Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine. Namaste Saraswati Deve Gaurine Nirvishesha Sunyavadi Paschabhyate Satharine. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhakta Vrinda. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhakta Vrinda. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna,
Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhubhya eva cha patitanam bhavanebhyo vaishnavebhyo namo namo. I am very grateful to be with you this evening. मैं बहुत कृतज्ञ हूँ आप सबके प्रति आज शाम साथ में आने के लिए। We are celebrating what Sri Mayapur Dham leadership has called the Sravana Utsav. यहाँ हम श्रवण उत्सव मना रहे हैं जो मायापुर में बनाया गया है।
a festival where we come together to hear and to chant the glories of the Supreme Personality of Godhead. एक उत्सव जहाँ पर हम एकत्र होते हैं भगवान की महिमा का श्रवण और कीर्तन करने के लिए। In 7th canto Srimad Bhagavatam, Prahlad Maharaj, he speaks to his father Hiranyakashipu this historical glorified verse, Shravanam Kirtanam Vishnu. श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद में प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु को वो बहुत मशहूर श्लोक बताते हैं जो कि है श्रवणम कीर्तनम विष्णु, describing the 9 processes of devotional service. जिसमें भक्ति के 9 विधि हैं। Sravana Kirtana Smarana Bandhana Pada Sevana Dasira Pujana Sakijana Atma Nivedana. And the foundational beginning is hearing. और उस सब की शुरुआत जो है वो श्रवण से होती है। But one can only hear when someone is chanting. और जब वो श्रवण तब होता है जब कोई कीर्तन कर रहा होता है। And you cannot chant unless you have heard. और जब तक आपने श्रवण नहीं किया तब तक कीर्तन भी नहीं कर सकते। So this Sravanam Kirtanam is a very reciprocal foundational principle that our whole lives are depending on spiritually. ये जो श्रवण और कीर्तन है महत्वपूर्ण सिद्धांत है जहाँ पर हमारा आध्यात्मिक जीवन निर्भर है। There is examples of great devotees who attained perfection by performing any one of these 9 devotional. ऐसे कई उदाहरण हैं भक्तों के जिन्होंने 9 में से किसी एक विधि को अच्छी तरह से करके जीवन की पूर्णता को प्राप्त कर लिया है। Shravana is Maharaj Parikshit. और श्रवण का सबसे अच्छा उदाहरण है परीक्षित महाराज। Now it is a very striking, instructive utsav or festival that he was hearing. ये बहुत ही महत्वपूर्ण उत्सव था जब वो श्रवण कर रहे थे। He was young, वो जवान थे, healthy, अच्छे स्वास्थ्य में थे, strong, और शक्तिमान थे, wonderful family, और बहुत अच्छा परिवार था। the most popular position in the world, पूरे दुनिया में सबसे मशहूर स्थान, such a great responsible service. बहुत ही जिम्मेदार सेवा। Suddenly, he was cursed to die in 7 days. अचानक उनको शाप मिला कि 7 दिन में उनकी मृत्यु होने वाली है। How did he choose to spend those last 7 days? उन्होंने अपने 7 दिन कैसे बिताने का निश्चय किया? In a Sravana Utsav. उन्होंने एक श्रवण उत्सव मनाया। He went to the bank of Mother Ganga. वो गंगा माता के तट पर गए। And there an assembly of great rishis, sages, Vaishnavas, saints, Paramhamsas, they gathered together because they cared about him. और बहुत सारे ऋषि मुनि परमहंस एकत्र हुए क्योंकि वो उनकी परवाह करते थे। This is such a example of devotee care to meditate upon. ये एक उदाहरण है कि कैसे भक्तों का ख्याल रखना चाहिए, इस पर ध्यान किया जा सकता है। When a devotee is ill, we understand that that devotee's body is entrusted to him or her by Krishna and by our gurus. जब कोई भक्त बीमार होता है तब हम जानते हैं कि उसका शरीर जो है कृष्ण के द्वारा सौंपा गया है। In 10th canto of Srimad Bhagavatam, Krishna's father Vasudev, he says, it is the duty of a devotee
to protect one's body as much as one possibly can, because the body is Krishna's property entrusted for Krishna's service. भागवत के 10वें स्कंद में कृष्ण के पिता वसुदेव जी बताते हैं कि हर एक का कर्तव्य है जितना हो सके शरीर की रक्षा करें, क्योंकि ये भगवान के द्वारा दी गई संपत्ति है. And all levels of devotees are dear to Krishna. And as we have seen and heard, every devotee, from the person who comes the first day to the person who leaves their body and goes back to Godhead, every devotee who's making efforts to serve, Srila Prabhupada felt deep gratitude for that devotee. जैसे कि आपने सुना होगा कि कोई भक्त जो पहले दिन आया है या जो इसने पूरा जीवन भगवान को दिया है, कोई भी भक्त होता तो प्रभुपाद उनके प्रति बहुत कृतज्ञता दिखाते थे. So the emotional care of devotees is also very much the duty of every member of our society, to encourage, inspire, and appreciate one another. भक्तों की भावनाओं का ख्याल रखना, एक दूसरे को प्रेरणा देना, एक दूसरे को प्रोत्साहन देना, ये भी हर एक भक्त का कर्तव्य है. But all of this types of care, physical, emotional, are for the purpose of spiritual care. और ये सब जो शारीरिक और मन का जो ख्याल है, उसका उद्देश्य है कि आध्यात्मिक ख्याल रखें. Sri Chaitanya Mahaprabhu here in Sri Navadvip Dham, he would call out to the people, Enechi ashadi maya nashi borolagi harinam maha mantra lao tumi magi. You are all very sick, and you are all suffering due to the threefold miseries of material existence. I have come with the supreme most effective medicine, the chanting of the holy names of Lord Hari. यहाँ पर मायापुर धाम में श्री चैतन्य महाप्रभु घोषणा करते हैं कि 3 प्रकार के तापों से आप पीड़ित हो, और मैं जो है औषधि लेके आया हूँ जो कि भगवान का पवित्र नाम है. The basis of all suffering is we have forgotten that we are eternally the servants, part and parcel of Krishna. सब दुखों का कारण ये है कि हम भूल गए हैं कि हम भगवान के नित्य शाश्वत अंश हैं. And due to that forgetfulness, we are vulnerable to all of the bewildering potencies of Maya, the illusory energy. और ये भूल जाने के कारण हम माया के प्रभाव में आ गए हैं. And dukalayam ashashvatam, janma mrityu vyaratya, that we are subject to birth, old age, disease, and death. और ये दुनिया दुखालय अशाश्वत है, यहाँ पर जन्म मृत्यु जरा और व्याधि रहते हैं. Everything we're trying to hold on to for our happiness and security will be taken away. जो भी चीज़ को हम पकड़ के रखें हैं सुख के लिए, सुरक्षा के लिए, वो हमारे से छीन लिया जाएगा. Padam padam yad vipadam natesham. And anything and anyone could be taken away at any moment. और पदम 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 का अर्थ है कि किसी भी समय कोई भी चीज़ आपसे छीनी जा सकती है. That is the nature of material existence. ये भौतिक अस्तित्व का स्वभाव है. But Krishna tells in Bhagavad Gita, Nahanyate hanyamanaya sarire. The soul will never die. भगवान गीता में बताते हैं कि आत्मा की मृत्यु नहीं होती. The soul is mamaivam so jivaloke, is part of Krishna. आत्मा जो है भगवान श्री कृष्ण का शाश्वत अंश है. Eternal, full of knowledge and full of happiness. वो सत और चिद और आनंद से भरा है. To awaken one's God consciousness or Krishna consciousness is the real solution and the real care for people who are suffering in this world. दुखमयी मानवता के लिए उसकी सुषुप्त कृष्ण भावना को जागृत करना, ये वास्तव में समस्या का हल है. Not just in a theoretical or ritualistic way, but from a heart that really cares. खाली ऊपर से या रीति रिवाज के रूप में नहीं, लेकिन एक हृदय से
जो केयर करता है, जो ध्यान रखता है। So all these devotees came together around Parikshit Maharaj, and Parikshit Maharaj asked questions. What is the highest purpose of life? What is the prime duty for every human being? And what is the highest responsibility for one who is about to die? और सब ऋषि मुनि आए, परीक्षित महाराज उनसे प्रश्न पूछा कि हर एक की क्या जिम्मेदारी है, विशेष करके जिसकी मृत्यु होनी है उसका क्या कर्तव्य है। Among all the great Paramhamsas, yogis and sages that had assembled, including Narada Muni, Vyasadeva, they all selected Sukadev Goswami, a 16-year-old boy, to speak. और इतने सारे ऋषि मुनि योगियों में इसमें व्यासदेव भी थे, उन सब ने मिलकर सुखदेव गोस्वामी को चुना जो कि 16 वर्ष के जवान थे। And he is the example of perfecting one's life through kirtanam. और सुखदेव गोस्वामी उदाहरण है कीर्तन में कैसे पूर्णता प्राप्त की जा सकती है। Kirtan is when we dance and chant. कीर्तन का एक मतलब है कि हम नृत्य करते हैं, गाते हैं। Kirtan is when we're sitting in bhajans, giving our hearts in absorption to the holy names. और कीर्तन का मतलब ये भी है कि जब हम पवित्र नाम की ध्वनि में पूर्ण अपने आप को मग्न कर देते हैं। And kirtanam is also speaking the names and the glories of the Supreme Personality of Godhead. और भगवान के नाम और महिमा का गान करना उसको भी कीर्तन कहते हैं। So we have gathered on the bank of the same river Ganges, हम भी गंगा जी के तट पर एकत्रित हुए हैं। in the holiest of all holy places, सारे पवित्रों में सबसे पवित्र स्थान Sri Navadvip Dham. जी नवद्वीप धाम। For this Sravana Utsav, this festival of hearing and chanting the glories of the Lord. ये उत्सव है जो भगवान की महिमा के श्रवण और कीर्तन करने के लिए। Over 500 years ago, Sri Advaita Acharya, he could see and he could feel the suffering of the people of this world. 500 वर्ष पहले अद्वैत आचार्य ये देख सकते थे कि मानवता कैसे दुखी है। Not just the poor and sick people. खाली गरीब और बीमार व्यक्ति नहीं, Not just the wealthy and healthy people. और खाली बहुत अमीर और अच्छे स्वास्थ्य वाले नहीं। He was feeling deep compassion for the distress of anyone who is disconnected from the loving service of Lord Krishna. वो सबके लिए दुखी थे जो भगवान की प्रेममय सेवा से अलग हो गए हैं। When a materialistic person sees other people happy, sometimes we're happy. Sometimes we're distressed and envious. कभी कभी हम देखते हैं कि कोई दूसरा व्यक्ति सुखी होता है तो हम सुखी होते हैं, या कभी कभी हमारे अंदर ईर्ष्या और दुख होने लगता है दूसरे के सुख को देख के। But Advaita Acharya was saying that this happiness was intoxicating a person with such a distraction to further cause them to forget their relationship with God. अद्वैत आचार्य सोच रहे थे कि ये जो लोगों का सुख है वो उनको भगवान की भक्ति से और दूर ले जा रहा है। And he knew that this happiness was giving no pleasure at all to the soul. और वो जानते थे ये बाहर का सुख जो है आत्मा को बिल्कुल सुखी नहीं कर सकता। And he knew that this happiness would soon end and the person would be conscious of suffering. और जानते थे ये सुख का अंत होने वाला है और अंत में व्यक्ति दुखी हो जाएगा। Srila Prabhupada would say the difference between happiness and distress in material existence is like the difference between wet stool and dry stool.
प्रभुपाद जी बोलते थे दुनिया में सुख और दुख ऐसे है कि गीली विष्ठा और सूखी विष्ठा। Now, according to our state of consciousness, we may like one or the other. हमारी चेतना के अनुसार हमारी पसंद हो सकती है कि हमें क्या पसंद है, But essentially it's the same. बट है तो वही विष्ठा, Because one will become the other. क्योंकि एक जो है वो दूसरा बन जाएगी, It's just a matter of circumstance. बस समय की बात। So happiness, distress, pleasure, pain, all of these things are essentially suffering and distress. और इस दुनिया के सुख और दुख ये दोनों ही वास्तव में दुख है। And when we connect with Krishna, who is Suhridam Sarvabhutanam, who is the best well-wishing friend of every living being, जब हम कृष्ण से जोड़ देते हैं जो सूर्य सर्वभूतानाम सारे के परम मित्र हैं, सारी जीवात्माओं के, how could we love Krishna without caring for the well-being of Krishna's children? कैसे हम कृष्ण से प्रेम करते हैं अगर हम कृष्ण के संतानों को नहीं ख्याल रख रहे? Krishna is in everyone's heart. कृष्ण सबके हृदय में है। He's seeing, observing the suffering of his own children, waiting for them to turn to him. And it is a devotee's greatest blessing that we can assist Krishna by helping people to turn to Krishna and find shelter in Krishna. कृष्ण जो है इंतज़ार करें कब जीव उनकी ओर मुड़ेगा, और हमारे लिए सबसे बड़ा सुख होता है जब हम सबको दूसरों को कृष्ण की तरफ जोड़ देते हैं। So Advaitacharya was seeing he's Mahavishnu and Sadashiva. He's seeing all the suffering that was going on in the world and all the suffering as Kali Yuga was going to progress. अद्वैत आचार्य जो महाविष्णु सदाशिव है वो देख रहे थे कि क्या दुख अभी है और फिर बाद में कलयुग में कैसे दुख बढ़ेगा। Advaitacharya is the knower of past, present and future. वे भूत भविष्य और वर्तमान तीनों जानते हैं। The Paramatma in everyone's heart is an expansion of Mahavishnu, who is Advaita Prabhu. जो परमात्मा हृदय में वो महाविष्णु के विस्तारित स्वरूप में जो कि अद्वैत आचार्य। He was sitting on bank of Ganga here in Shantipur and Navadvip, understanding all the physical, mental and spiritual struggles and pains that we're all going through. वो यहाँ पर शांतिपुर और नवद्वीप में गंगा किनारे वो जानते थे कि सब दुख और तकलीफ़ें जो हम सब गुजरने वाले हैं। And he made a vow. उन्होंने प्रतिज्ञा की। He was reading from scripture, from the Gautamiya Tantra, that if one offers water from Mother Ganga and tulsi leaves to Lord Krishna, Krishna will fulfill his desire. उन्होंने ये पढ़ा था कि अगर कोई तुलसी के पत्ते और गंगा जल लेकर कृष्ण को अर्पण करते हैं तो कृष्ण उसकी सारी इच्छा को पूरी करते हैं। He was fasting. वो व्रत रख रहे थे। Throughout the day, offering water from Mother Ganga and tulsi leaves and manjaris. और वो गंगा को तुलसी के पत्ती और मंजरी जो है गंगा जल के साथ अर्पण कर रहे हैं। With tears of compassion pouring from his eyes. उसके आंखों में दया के अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं। Loudly calling out for Krishna to come to give his mercy to all of us. वो जोर से पुकारे थे, कृष्ण जल्दी आओ और हम सबको कृपा दिखाओ। And he wasn't alone. The devotee and community in Navadvip were all in that spirit. और अकेले नहीं थे, नवद्वीप के सारे भक्तों का ये अनुभव था। Srivas Thakur with his brothers, they were chanting in kirtan, crying for the Lord to come. श्रीवास और उनके भाई वो कीर्तन करते हुए भगवान को पुकार रहे थे अवतार लेने के लिए। Haridas Thakur was in his cave in Fuliagram, crying for the Lord to come. हरिदास ठाकुर फुलिया में अपनी गुफा में बैठे हुए वो भी रो रो कर भगवान को पुकार रहे थे। These three personalities, Srivasa's Narada Muni, Advaitacharya's Mahavishnu Sadashiva, and Haridas Thakur is Brahma.
ये तीन व्यक्ति हैं जो हरिदास ठाकुर ब्रह्मा जी हैं, अद्वैत आचार्य सदाशिव हैं और श्रीवास ठाकुर नारद मुनि हैं। Brahma is the original guru of this universe. ये पूरे ब्रह्मांड के पहले गुरु ब्रह्मा जी हैं। But seeing the condition of the people suffering in this age of Kali, कलयुग में लोगों की दुखमय स्थिति को देख करके even the almighty Advaita, who could create universes by his thought, who could impregnate entire universes and cosmic manifestations by a glance, जो अद्वैत आचार्य इतने बड़े हैं कि वो अपनी दृष्टिपात से ब्रह्मांड निर्माण कर सकते हैं, who's the source of all incarnations, जो सारे अवतारों के स्रोत हैं, as they descend in material existence, जब वो भौतिक अस्तित्व में आते हैं, they're all feeling to give the highest happiness of the love of the residents of Vrindavan to the lost, confused, and fallen souls of this age of Kali. Only Krishna can do it. वो जानते थे कि ये जो भगवान का प्रेम है, जो जीव जो खो गए हैं, उनको सिर्फ कृष्ण ही उद्धार कर सकते हैं। In fact, only Krishna, who is carrying in his heart the pure love, the Mahabhava of Sri Radha. वही कृष्ण जो राधा रानी का महाभाव अपने हृदय में धारण कर रहे हैं। Advaitacharya was the leader of the Brahmin community. अद्वैत आचार्य ब्राह्मण समुदाय के नेता थे। Haridas Thakur was coming from a social perspective at the time, a family of untouchables. सामाजिक दृष्टि देखना जाए तो हरिदास ठाकुर अछूतों के परिवार से आ रहे थे। Yet they were the best of friends. और इन दोनों में बहुत घनिष्ठ मित्रता थी। They honored, respected, and loved one another. वे एक दूसरे का आदर करते और प्रेम करते। Because Krishna was in the center of their relationship. क्योंकि उनके संबंध के बीच का केंद्र कृष्ण थे। And together, they were crying out the holy names, begging Krishna come to deliver us. वो कीर्तन करके कृष्ण को पुकार रहे थे, जो आए और हमारा उद्धार करें। And here in Mayapur, Navadvip Dham, Krishna, Radha, Shri Krishna Chaitanya, Radha Krishna Nahi Anya. Lord Shri Chaitanya Mahaprabhu is the combined form of Shri Radharani and Lord Shri Krishna. और यहाँ नवद्वीप धाम में श्री चैतन्य महाप्रभु जो राधा और कृष्ण जो है एक स्वरूप में यहाँ प्रकट हुए हैं। Under the neem tree at the Yoga Pit, as the son of Sachi Mata and Jagannath Mishra, was born Lord Gauranga, the supreme, most merciful of all avatars. सारे अवतारों में सबसे दयालु भगवान गौरंग एक नीम पेड़ के नीचे जगन्नाथ मिश्र और सची माता के पुत्र के रूप में योगपीठ में प्रकट हुए। And in many places in Sri Chaitanya Bhagavat and Sri Chaitanya Charitamrita, Sri Chaitanya Mahaprabhu, he proclaimed that I came to this world because of the loud cries of compassion of Sri Advaita Prabhu. श्री चैतन्य भागवत चैतन्य चरितामृत में कहीं बहुत जगह पे बताया गया कि भगवान स्वयं घोषणा करते हैं कि मैं अद्वैत आचार्य की प्रार्थनाओं के कारण धरती पर आया। He is identified as Sadashiva. और वो अद्वैत आचार्य सदाशिव है। In just a couple days we will be celebrating Shivaratri. अभी 2 दिनों में शिवरात्रि मनाने वाले। Vaishnavanam Yata Shambhu. He's declared to be the greatest of Vaishnavas. वो वैष्णवानाम यथा शंभु, शिवजी जो है सारे वैष्णव में सर्वश्रेष्ठ हैं। Srila Prabhupada and Acharyas teach us that Lord Shiva is an expansion of Vishnu, is the Supreme Lord. हमारे आचार्य प्रभुपाद जी बताते कि कैसे भगवान शिवजी भी जो है उनके ही एक्सपांशन हैं। And why is he described as the greatest of Vaishnavas?
क्यों उनको वैष्णव में सबसे महान भक्त बताया गया है? Srila Prabhupada in Srimad Bhagavatam especially explains it in the context of his care, his compassion to the suffering souls of this world. श्रील प्रभुपाद भागवत में बताते हैं क्योंकि शिवजी के अंदर दूसरों के प्रति, जीवात्माओं के प्रति दया और करुणा का भाव है, इसलिए उनको सर्वश्रेष्ठ वैष्णव बताए. In the 8th canto of Srimad Bhagavatam, there is the glorious pastime of the Devatas and the Asuras. They're churning the ocean of milk. श्रीमद् भागवत के अष्टम स्कंद में कथा आती है कैसे देवता और असुर मिलकर समुद्र मंथन करते हैं. With the promise that they will get nectar. उनके अंदर यह आशा थी कि वो अमृत प्राप्त करेंगे. So many struggles and challenges were coming one after another in their efforts. उनके इस प्रयास में बहुत सारी चुनौतियां आ रहे थे. But still, they were willing to work so hard. फिर भी वो मेहनत करने के लिए तैयार थे. Because everyone wants to enjoy. क्योंकि वो भोग करना चाहते थे. Because enjoyment gives us a sense of shelter from suffering. क्योंकि जो सुख है उससे एक आश्रय की प्राप्ति होती है, दुख से मुक्ति होती है. In order to enjoy, we want security, we want loved ones, we want enjoyments to the mind and the senses. They give us shelter from the struggles and the miseries of material existence. ये जो सुख है वो इसलिए होता है कि हमें जो भौतिक दुख से थोड़ी निवृत्ति मिल जाए. And how people work so hard and endure so much struggle for the temporary experiences that end in pain. और कैसे लोग इतना मेहनत करते हैं जो कि क्षणिक सुख की प्राप्ति करने के लिए. So everyone has their idea of what is nectar. और हर एक का अपना अपना विचार था कि अमृत का क्या अर्थ है. The demons, they were not seeking the nectar of love of God. They were seeking nectar that will give them power to enjoy more and more their senses and to conquer more people. वो असुर जो है वो ये सोच रहे थे कि अमृत का मतलब वो भगवत प्रेम का अमृत नहीं, लेकिन वो अमृत जिसमें और शक्ति मिले, वो और शोषण करें और इंद्रिय तृप्ति करें. The first thing that came out of this joint effort was poison. और सबसे पहले जहर प्रकट हुआ. The most deadly poison anyone has ever seen in this creation. इस सृष्टि में इससे बढ़कर कोई भयानक जहर देखा नहीं गया था. It was so powerful. वो इतना शक्तिशाली था. And it was spreading everywhere. सब जगह फैल रहा था. It seemed like it was limitless volumes of poison were just spreading in all directions. ऐसा लग रहा था कि असंख्य मात्रा में जहर सब जगह पर फैल रहा है. And neither the demigods or these powerful asuras, nobody could do anything to control it. और देवता और असुर कोई भी कुछ कर नहीं पा रहे थे उसको वश में करने के लिए. They were helpless. वो निसहाय थे. They were about to suffer and die, and there's nothing anyone could do. वो दुखी होकर मरने वाले थे, कोई कुछ कर नहीं सकता था. And Lord Vishnu was among the demigods watching. और भगवान विष्णु जो है वो भक्तों के हित चिंतक हैं. And they all went to Mount Kailash. और फिर वो भगवान विष्णु के बोलने पे कैलाश पर्वत के पास गए. Many pages where they're praying to Lord Shiva to save them. सारे देवता शिव जी से प्रार्थना करने लगे, बचाओ. And Srila Prabhupada and our acharyas asked the simple question, why didn't Vishnu do it himself? श्रील प्रभुपाद और आचार्य पूछते हैं कि भगवान विष्णु ने खुद ही क्यों नहीं रक्षा की. Because Lord Vishnu wanted Shiva to get the credit and the glory. क्योंकि भगवान विष्णु चाहते थे कि उसका श्रेय जो है शिव जी को प्राप्त हो. In Bhagavad Gita, before the battle of Kurukshetra, Krishna had already shown Arjuna his universal form and Virat Rupa. भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को पहले से दिखा दिया था कि कैसे लड़ाई हो गई है, पहले विराट रूप दिखाया था. He could have annihilated the Kurus within a moment. वो सारे कुरुओं का नाश कुछ ही क्षणों में कर सकते थे. But he wanted Arjuna to forever get the glory of being victorious. वो चाहते थे कि अर्जुन को श्रेय मिले विजेता होने का.
So when everyone came together in deep desperation, praying to Lord Shiva for shelter. और सब आ गए एकत्र और शिवजी से प्रार्थना करने लगे सुरक्षा के लिए. He spoke to Bhavani, to Parvati, भगवान शिवजी पार्वती को बोलने लगे, his consort, that just see how people are suffering because of this poison. ये देखिए लोग कितने दुखी हैं इस जहर के कारण. We can't even imagine this situation. हम उस स्थिति की कल्पना भी नहीं कर सकते. You know, we're very concerned about climate change. उनको कोई which is a serious issue. जो कि बहुत गंभीर विषय है. We're concerned about, you know, there's nuclear bombs and there's so many dangers in this world. हमको चिंता होती है न्यूक्लियर बॉम्ब के और बहुत सारे खतरे होते हैं. But these are just, you know, problems that could happen and are gradually happening in our one little planet. और ये जो समस्या हैं वो बहुत छोटे हैं और एक क्षण के लिए हैं. But this poison was about to exterminate all life in the whole universe. लेकिन ये जहर इतना शक्तिशाली था कि ब्रह्मांड में सारे जीवात्माओं का अंत हो जाता. And it wasn't something that we could argue about. It might happen to our children or grandchildren or great-grandchildren. It was going to happen immediately. और वो ये नहीं था कि सोचना कि बाद में हमारे बेटे पोते को क्या होगा. ये तुरंत इसके बारे में कुछ करना था. Crying to Lord Shiva for, and Lord Shiva tells Parvati. और भगवान शिव जी बोले पार्वती को, just see all this poison spreading everywhere and all the suffering that it will cause. ये देखो ये जो जहर है कैसे सब जगह पर फैल रहा है. In this illusory energy, under the bewilderment of Maya, people have this tendency for animosity and fighting with one another. ये जो माया के प्रभाव में सब जीवात्मा में प्रवृत्ति होती है कि एक दूसरे का लड़ाई करें. And create so much suffering. और कितना दुख निर्माण होता है. But a devotee of the Lord is one who is willing to accept inconvenience and suffering oneself to deliver others from their suffering. एक भक्त वो है जो खुद असुविधाएं और दुख सहन करता है दूसरों के दुखों को दूर करने के लिए. Therefore, I must drink all of this poison myself. और इसीलिए शिव जी बोले पार्वती को, मैं ये सारा जहर स्वयं ग्रहण करूंगा. And with Parvati's blessings, permission, Lord Shiva, he took this massive quantity of poison and condensed it so it would fit in the palm of his hand. और शिव जी ने अपनी शक्ति से वो विशाल समुद्र जहर को अपने हाथों में कर दिया, छोटा कर दिया. Very, very concentrated. We cannot imagine the power of that palmful of poison. आप सोचिए मुट्ठी भर जहर का कितनी भयानक शक्ति होगी. Enough poison that would fill oceans were in the palm of his hand. और इतना जहर जो सागर भरने वाले वो मुट्ठी में भर. And then he drank it. और उन्होंने पी लिया. And it made a blue line on his throat. और उनके गले में एक नीली रेखा आ गई. And it is considered a beautiful ornament. और उसको एक सुंदर आभूषण माना जाता है. Because it manifests his willingness in his care for all people. क्योंकि वो दिखाता है कि कितना वो दूसरों के लिए ख्याल रखने के तैयार हैं. And Sukadev Goswami, in glorifying Lord Shiva, he describes that the service that
pleases Krishna the most is when one is willing to accept inconvenience to alleviate the sufferings of others. शुकदेव गोस्वामी बताते हैं कि भगवान कृष्ण को सबसे बड़ी सेवा प्रिय वो है कि दूसरों के लिए असुविधाएं और दुखों को स्वीकार करना. This is Advaitacharya. He's seeing the poison of forgetfulness of Krishna, the poison of Maya, spreading and causing such imminent suffering to all of us. And he's crying, Krishna, please come to reveal the nectar of your holy names for the people of this world. और अद्वैत आचार्य देख रहे हैं कि माया का जहर सब जगह पर फैल रहा है. वो भगवान से प्रार्थना करें कि आप प्रकट हो और लोगों को अपने हरिनाम का अमृत प्रदान करो. Demigods and the demons, they were trying to get nectar, Amrita. But by Advaitacharya's mercy, Krishna came to this world with the love of Sri Radha to give their love, the rarest, highest, and purest of all benedictions, Param Vijayate Shri Krishna Sankirtana. अद्वैत आचार्य की प्रार्थना, through the nectar of the holy names. अद्वैत आचार्य की प्रार्थना से उन्होंने भगवान को धरती पे आने के लिए मजबूर किया और वो सबसे दुर्लभ जो कृष्ण प्रेम है वो हरि नाम के द्वारा सबको प्रदान किया. There was an incident when Lord Chaitanya was young. एक घटना है जब चैतन्य महाप्रभु जवान थे. An astrologer came to his home. उनके घर में एक ज्योतिष आए थे. And although he was so learned and he could actually see into the future, he was just going door to door like a beggar. हालांकि वो बहुत विद्वान थे और भविष्य जानते थे, वो घर घर जा रहे थे भिक्षुक के रूप में. To help others. दूसरों को मदद करने के लिए. And Nimai Gauranga, he said to the astrologer, please tell me who I was in my previous life. नीमाई ने ज्योतिष से पूछा, बताओ पूरे जन्म में मैं कौन था. The astrologer, according to Sri Chaitanya Charitamrita, he began his calculations. वो ज्योतिष ने चैतन्य चरितामृत के अनुसार अपना गणना करना शुरू किया. And calculations are not enough. You actually have to, things need to be revealed. So he did his calculations and then he was meditating. वो जब अपने गणना कर रहा था वो ध्यान लगा रहा था. And the most wonderful thing happened. और बहुत अद्भुत घटना हुई. In his meditation, he could see the all-effulgent, all-beautiful, supreme personality of Godhead. और उन्होंने क्या देखा कि सब तेजस्वी, सर्व सुंदर भगवान दिखाई पड़े उनको. He saw the beautiful form of the Lord with the limitless light of the Brahma Jyoti emanating from him. उन्होंने भगवान के अद्भुत रूप को देखा जहाँ से अनंत ब्रह्म ज्योति प्रकट हो रही है. He was utterly struck with wonder. He was speechless. वो बिल्कुल कुछ बोल नहीं सके. What am I seeing? मैं क्या देख रहा हूँ? And Lord Chaitanya interrupted him. भगवान चैतन्य रोका उनको. He said, please tell me, what do you see? पूछा, बताओ बताओ क्या देखा? Who was I? Who was I? मैं कौन था? And the astrologer said, I know who you are and I know who you were. You are the supreme Godhead. वो बोला, मैं जानता हूँ आप कौन है, आप परम भगवान हो. You are Param Tattva, Param Dhamma, Param Brahma. You're the supreme Brahman, the supreme truth. आप ही परम तत्व, आप ही परम सत्य हो, आप ही परम भगवान हो. You are the source of everything and everyone that exists. सब चीजों के स्रोत आप ही हो. Lord Chaitanya replied, भगवान चैतन्य ने जवाब दिया, My dear sir, ए प्रिय महाशय,
Your calculation is not correct. आपकी गणना जो है ठीक नहीं है। In my previous life, I was a cowherd boy. पूर्व जन्म में मैं ग्वाला था। And because I nicely took care of calves and cows, I was given the birth in a Brahmin family in this life. क्योंकि मैंने गायों की बछड़ों की सेवा की, इसलिए मुझे ब्राह्मण परिवार में जन्म मिला। And Lord Chaitanya Mahaprabhu, the astrologer, he said, actually, I'm seeing you are God. I'm seeing it. वो ज्योतिष बोला कि मैं देख रहा हूँ आप भगवान हैं। And Lord Chaitanya Mahaprabhu was so pleased with him. महाप्रभु उनसे बहुत प्रसन्न हुए। At that moment, उसी क्षण he gave him ecstatic love for Krishna prema bhakti. उन्होंने उसको भगवत प्रेम प्रदान किया। So this is Navadvip Dham. ये नवद्वीप धाम। When Sri Chaitanya Mahaprabhu established the Sankirtan movement, चैतन्य महाप्रभु ने संकीर्तन आंदोलन की शुरुआत की। he described the supreme goal of life, the sadhya, is Krishna prema, love for Godhead. उन्होंने बताया कि परम लक्ष्य है कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। And the process to attain it, the sadhana, is the congregational chanting of the holy names of the Lord. और साधन है संकीर्तन करना। At Srivasangam, Lord Chaitanya and his devotees were having kirtan. श्रीवास आंगन में चैतन्य महाप्रभु और उनके भक्त कीर्तन कर रहे थे। And one day, Suklambar Brahmachari, और एक दिन शुक्लांबर ब्रह्मचारी आए। he lived just close by. He had a little hut on the bank, right on the bank of Mother Ganga. वो गंगा जी के तट के पास में रहते थे। He would go out to beg every day. वो हर रोज भिक्षा मांगने जाते He थे। would go to so many houses. बहुत सारे घरों में जाते थे। And he would only take like one handful of rice from each house. और हर एक से सिर्फ एक मुट्ठी चावल लेते थे। And it was just raw rice that hadn't been washed or cooked yet. He had it in a little bag, begging bag. वो कच्चा चावल था जो धोया नहीं गया था, पकाया नहीं गया था। And one day when there was kirtan at Srivasangam, he attended and he was dancing blissfully. He was a brahmachari who had actually nothing, and in his little bag there was just this very cheap broken pieces of raw rice. वो शिवास आंगन में नृत्य कर रहे थे। बहुत सिंपल ब्रह्मचारी थे। उन कच्चा हुआ टूटे हुए चावल के दाने उनके झोले में थे। But he was tasting the sweetness of the holy names. Lord Chaitanya is so pleased when he sees that we're relishing the nectar of the holy names of Radha and Krishna. चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न होते हैं जब वो देखते हैं कि हम राधा और कृष्ण के पवित्र नाम का आस्वादन कर रहे हैं। And he's teaching us how we can actually relish the holy names of Radha. और वो हमें सिखा रहे हैं कि कैसे हम उस नाम के रस का आस्वादन करें। So this beautiful example, he called Suklambar to come closer. उन्होंने शुक्लांबर ब्रह्मचारी को पास में बुलाया। And as Suklambar was dancing, Lord Chaitanya Mahaprabhu thrust his hand, because Lord Chaitanya had long arms. He thrust his hand into the bag of Suklambar Brahmachari with a whole handful of unwashed, raw, broken rice. उन्होंने उनके लंबे हाथ थे शुक्लांबर ब्रह्मचारी के झोले में हाथ डाल के वो कच्चे जो टूटे हुए चावल के दाने थे वो अपने हाथ में ले लिए। Very enthusiastically, he ate it. और उत्साह से खा लिया। Suklambar Brahmachari was thinking, this is terrible. At least let me go home and wash it and cook it and offer it. You're eating this rice from my bag. And Lord Chaitanya Mahaprabhu, he put his hand in again, and handful after handful after handful, he was eating the rice.
शुक्लम ब्रह्मचारी सोच रहे थे कि अगर कम से कम इसको धो लेता, पका लेता, भगवान को अर्पण करता, लेकिन भगवान फिर से बार बार वो खाने लगे। All the devotees were struck with wonder. सारे भक्त आश्चर्यचकित हो गए। And Lord Chaitanya Mahaprabhu was extolling the glories of the nectar of that rice because it was coming from the bag of a devotee who had pure unalloyed love. और चैतन्य महाप्रभु उसकी महिमा गा रहे थे क्योंकि वो एक भक्त के द्वारा दिया गया था जो कि शुद्ध कृष्ण प्रेम प्राप्त किए थे। Now, we cook things and we have to be very clean. We have all regulative principles and standards of deity worship, of cleanliness and preparation. Suklambar Brahmachari didn't even offer it. वैसे तो देखें तो भगवान के नियम के लिए सफाई और बहुत कुछ होते हैं, लेकिन ये शुक्लम ब्रह्मचारी तो भगवान को अर्पण भी नहीं किया। Patram pushpam palam toyam yome bhakta prayachati. If one offers me with love and devotion a fruit, a flower, a leaf or water, I will accept it. But he didn't even offer it. भगवान बोलते हैं पत्ता, जल, फूल कोई अर्पण किया मैं स्वीकार करता हूँ। उन्होंने तो अर्पण भी नहीं किया था। But the Lord, because of his love and devotion, although he was a very, very poor, simple beggar brahmachari, nobody even knew he was a devotee except the devotees themselves. He would just go begging, he wouldn't talk to anyone. But Lord Chaitanya Mahaprabhu, he was eager to steal the rice from him. शुक्लम ब्रह्मचारी इतने साधारण भक्त थे, कोई जानता नहीं था उनको, लेकिन भगवान चैतन्य महाप्रभु उनके झोले से चुरा कर चावल खा रहे हैं। Sudama Vipra, when he came to visit Dwarka, Krishna stole a morsel of his chipped rice. ऐसे ही द्वारका में भगवान कृष्ण जब सुदामा विप्र आते हैं तो उनके झोले से भगवान चावल स्वीकार करते हैं। But then Rukmini stopped him from eating anymore. Said, no, that's enough. उन्होंने एक बार लिया, लेकिन दूसरी बार से फिर रुक्मिणी ने रोक दिया उनको लेने से। But Suklambar Brahmachari Mahaprabhu, handful after handful. लेकिन शुक्लांबर ब्रह्मचारी केस में भगवान ने कई बार छीन लिया उनसे। And in Krishnadas Kaviraj Goswami describes after this, Lord Chaitanya described the verse from the Brihad Naradiya Purana. और Harinama 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 eva kevalam kalo nasteva 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 gatiranyata. कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं कि ये श्लोक जो है शुक्लंबर ब्रह्मचारी को बताया उन चैतन्य। In this age, the holy names of Lord Hari, Eva Kevalam, Harinam Eva Kevalam. There is no other way, certainly. Eva means certainly. There is certainly no other way, no other way, no other way than chanting the holy names, chanting the holy names, chanting the holy names to receive the highest benediction of Krishna Prem in this world. इस कलयुग में कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए और कोई उपाय नहीं, और कोई उपाय नहीं, और कोई नहीं उपाय है। Kali Kale Namarupe Krishna Avatar. Krishna has so mercifully descended, incarnated with all of his potencies in his holy names. कृष्ण इतने दयापूर्वक अपने सारे शक्तियों के साथ नाम के रूप में प्रकट हुए हैं। And Sri Radha has descended with all of her potencies in her holy names. उसी तरह से श्री राधा रानी भी जो है अपने सारे शक्तियों के साथ नाम में प्रकट हुई। And Sri Chaitanya Mahaprabhu, who Radha Bhavaduti Suvalitam Nomi Krishna Swarupam, who is Krishna with the Mahabhav and the complexion of Sri Radha, is revealing himself in this Hare Krishna Mahamantra. चैतन्य महाप्रभु जो कृष्ण श्री राधा रानी के भाव और द्युति को स्वीकार करके वो अपने आप को प्रकट कर रहे हैं इस हरे कृष्ण महामंत्र में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।
Namo Mahabharanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namane Gaura Tveshe. Sri Rupa Goswami gives us this information. Of all avatars, Lord Chaitanya is the most merciful. स्वयं बताते हैं कि सारे अवतारों में श्री चैतन्य महाप्रभु सबसे ज़्यादा उदार हैं. Given what no other incarnation has given so freely. और कोई अवतार नहीं दिया वो चीज़ को मुफ्त में बांट रहे हैं. Parama Karuna Pahundui Jana Nitai Gaurachandra. Lord Chaitanya and Lord Nityananda are supremely compassionate. श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु परम दयालु हैं. With the Panchatattva, they have plundered the storehouse of love of God, of the spiritual world. पंचतत्व ने जो आध्यात्मिक धाम का जो कृष्ण प्रेम है वो भंडार फोड़ दिया है. They have ecstatically tasted the contents. उन्होंने उसका स्वयं आस्वादन किया है. And they're distributing. और वो सबको वितरित कर रहे हैं. They're distributing Krishna prema through Krishna naam. वो कृष्ण प्रेम बांट रहे हैं कृष्ण नाम के द्वारा. Without considering who is fit or who is unfit. वो ये देखने कि कौन पात्र है कौन अपात्र है. Which place is auspicious or which place is inauspicious. कौन से मंगलमय है कौन से अमंगलमय स्थान है. What time is auspicious or what time is not auspicious. कौन सा समय शुभ है या अशुभ है. Who is pious and who is impious. कौन सुकृति है कौन दुष्कृति They're है. giving the opportunity to everyone, everywhere, at all times. वो सबको सब जगह पर अवसर प्रदान कर To रहे हैं. actually experience real happiness through unalloyed devotional service. शुद्ध भक्ति के द्वारा सच्चे सुख का आस्वादन करने के लिए. Through the association of devotees chanting the holy भक्तों के संग में गाने से हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. And we see in Lord Chaitanya Mahaprabhu's Leelas here in Navadvip and in Puri, the devotees together, they practically were always doing one of two things. They were either discussing Krishna's pastimes and teachings or chanting his holy names. हम देखते हैं यहाँ पर या नवद्वीप में या पुरी में चैतन्य महाप्रभु या तो संकीर्तन में लगे होते थे या कृष्ण कथा कर रहे होते. Hari Katha and Hari Kirtan. बस हरि कथा हरि कीर्तन. Sravanam Kirtan. And they were constantly absorbed. और वो पूर्ण रूप से मग्न थे. But even though they were supremely enjoying among themselves, हालांकि वो स्वयं बहुत आस्वादन कर रहे थे. they cared. They wanted to share with everyone. लेकिन वो दूसरों के साथ उसको बांटना चाहते थे. There is a pastime at Srivasankam where Sri Chaitanya Mahaprabhu during Mahaprakash was fulfilling every devotee's innermost desires. ये लीला है महाप्रकाश लीला जो श्रीवास आंगन में जहाँ पर महाप्रभु सब भक्तों की सारी इच्छाओं को पूरी कर रहे थे. He was revealing exactly the form of the Lord that the devotee worshipped and loved within the core of their hearts. जो भक्त जिस रूप में भगवान की हृदय में आराधना करते थे वही रूप भगवान उस भक्त को दिखा रहे थे. And fulfilling every benediction a devotee would ask. और हर एक आशीर्वाद जो भक्त चाहते थे भगवान प्रदान कर रहे थे. And even if they didn't ask, he was giving. और नहीं भी मांगते तो भगवान प्रदान कर रहे थे. Now, toward the end of this 21 hours of Lord Chaitanya revealing himself as the Supreme Personality of God, a very rare occasion. और 21 घंटे तक ये लीला चली. जब ये लीला का अंत हो रहा था बहुत दुर्लभ समय था. Every devotee was supremely blessed. हर एक भक्त को सबसे बड़ा आशीर्वाद मिल गया था. But Lord Chaitanya did not call Mukunda Datta. भगवान चैतन्य महाप्रभु ने मुकुंद दत्त को नहीं बुलाया. And Mukunda Datta was feeling that he had displeased the Lord while everyone else was pleasing the Lord so nicely. And with such a humble heart, he was crying.
मुकुंद दत्त सोच रहे थे कि सबने भगवान को प्रसन्न किया, मैंने नहीं किया, इसलिए वो रो रहे थे। Now all the other devotees, their hearts were all in pain because Mukunda Datta was not receiving the mercy. और सारे भक्तों का हृदय बहुत दुखी था क्योंकि मुकुंद दत्त को कृपा नहीं मिल रही थी। Materially, this is a very inconceivable situation. भौतिक दृष्टि से तो अचिंत्य दृष्टि है। After you're being glorified by the Supreme Lord, praised by all the devotees, and given all benedictions and ecstatic revelations, would you really be heartbroken that one person is being neglected? मान लो आपको सबसे बड़ा आशीर्वाद मिल रहा है, सबसे बड़ी स्तुति हो रही है, क्या आप दुखी होंगे अगर एक व्यक्ति को कृपा नहीं मिल रही? The devotees were praying to Lord Chaitanya, please, why are you neglecting Mukunda? At least call for him, at least look at him. What has he done? भक्तों ने निवेदन किया भगवान से कि मुकुंद दत्त पे कृपा करिए, उनको पास में बुलाइए। That is how much they cared about each other. वो एक दूसरे का ख्याल रखते थे। That was the Sangam, which was the consciousness of care among devotees, that actually is the foundation of the spreading of the Sankirtan movement. ये जो भक्तों का ख्याल रखना जो है दिखाई पड़ रहा है, वो संकीर्तन को पहुंचाने का नींव था। Lord Chaitanya began the Sankirtan movement at Srivas Sangam among devotees. भगवान चैतन्य महाप्रभु ने संकीर्तन आंदोलन श्रीवास आंगन में भक्तों के बीच में शुरू किया। Where he revealed such deep, selfless, loving relationships and care among the Vaishnavas, and then spread it to the world. वो जो निस्वार्थ प्रेम भक्तों में प्रकट करते और फिर पूरी दुनिया में वितरित करते। When devotees begged Lord Chaitanya, please call Mukunda, Lord Chaitanya said, no, I never want to see him. जब भक्तों ने निवेदन किया तो भगवान बोले नहीं, मैं उनको नहीं चाहता। Because when he's with devotees, he's just like devotees, but then when he's with Mayavadis, he's like that. क्योंकि मुकुंद का ऐसा था कि वो जब वैष्णव के साथ होते तो वैष्णव रहते और मायावादियों के साथ मायावादी की तरह व्यवहार करते। And actually he was speaking about some incident from many years before. और ये जो घटना हुई थी ये बहुत पुरानी घटना थी। And devotees were saying, will you ever see? Mukunda was calling out, will I ever see him? मुकुंद ने निवेदन किया भगवान से पूछो क्या कभी मुझे दर्शन होंगे? And devotees were praying, will you ever see him? Will you ever see him? भक्त बहुत नम्रता से निवेदन कर रहे थे, क्या आप फिर से उनको दर्शन देंगे? Mahaprabhu Gauranga, with a very, very thunderous voice, said, after 10 million births. भगवान चैतन्य महाप्रभु गंभीरता से बोले कि उनको 100 लाख जन्म के बाद दर्शन होंगे। How would you feel? Mukunda Datta was in ecstasy. और मुकुंद दत्त बहुत खुश हो गए। He started dancing. वो नृत्य करने लगे। And crying out with tears rolling from his eyes, after 10 million births I will see the Lord. उनके आंखों में आंसू आके वो रोते हुए बोलने लगे खुशी से कि मुझे 100 लाख जन्म के बाद दर्शन होंगे। That's how much he was teaching us what is the value of Krishna consciousness. वो हमें सिखा रहे थे कि कृष्ण भावना की क्या कीमत है। If we have to surrender our lives and sacrifice everything for 10 million more births, if we get love of Krishna, that's such a small price for something so great. अगर 100 लाख जन्म प्रयास करने के बाद अगर हमें कृष्ण प्रेम मिल जाता है तो वो भी बहुत बड़ा आशीर्वाद है। When Lord Chaitanya saw Mukunda Datta in that way, he smiled. और भगवान चैतन्य ने मुकुंद दत्त के भाव को देखकर मुस्कुराए। He said, Mukunda, come now. और वो बोले मुकुंद अभी आ जाओ। But Mukunda was in a samadhi of bhakti. He was absorbed. He was not seeing anything external. He was just thinking, only 10 million births, I will see the Lord, so much mercy. And the Lord said, come now. And he was only 10 million. He couldn't hear. And then the devotees, they were saying, the Lord is calling for you. And he was still in his trance.
of meditating on the mercy he's receiving, and finally the devotees picked him up and put him right in front of Lord Chaitanya. और मुकुंद तो इतने एक्सटेसी में थे वो सुन नहीं पाए, वो बोले मैं 10 और लाख जन्म के बाद में, और भक्त उनको उठा कर ले आए। And Lord Chaitanya called for him. और भगवान ने उनको पुकारा। And he opened his eyes, and there Sri Chaitanya Mahaprabhu is smiling upon him. और फिर भगवान उनको मुस्कुराकर दर्शन दिए। So this wonderful narration gives us a glimpse of how much the devotees were concerned with all of each other receiving the mercy of the Lord. ये जो कथा बताती है कि कितना भक्तों को एक दूसरे के प्रति बहुत प्रेम था और संबंध था, दूसरों को कृपा मिले। A few years later, कुछ सालों के बाद one Brahmin, एक ब्राह्मण he came to Srivasangam शिवा सांगन के पास, and he wanted to join the kirtan. वो भी देखना चाहिए। But the door was closed, दरवाज़ा बंद था, and he couldn't get in. वो अंदर नहीं आ सके। Because at Srivasangam, before the Harinam was spread throughout Navadvip, only the most confidential, pure-hearted associates were given entrance. ये शिवा सांगन में शुरुआत में सिर्फ जो बहुत ही शुद्ध भक्त है उनके लिए कीर्तन होता था। So this Brahmin was so insulted. वो ब्राह्मण को बहुत बेइज्जती महसूस हुई, He was furious. बहुत गुस्से हो गए। How dare these people not allow me? ये क्या इनकी हिम्मत है, मुझे अंदर नहीं आने दे रहे। Queen Kunti Janmaishwarya Shruta Shibir, this beautiful verse, that the great disqualifications for pure devotional service are high birth, high knowledge, beauty, and wealth. कुंती महारानी बताते हैं कि ये 4 चीज़ें हैं, सुंदर शरीर, बहुत धन और बहुत ऊंचे परिवार में जन्म लेना। Because they tend to make us proud and think we're superior to others. इससे अभिमान हो जाते हैं, हम मानते हैं कि हम दूसरों से ज़्यादा श्रेष्ठ हैं। And where there is false pride, one cannot chant the names of the Lord with feeling. और जहाँ पर मिथ्या अहंकार होता है तब भगवान का नाम सच्चे भाव से नहीं ले पाते। Trinarapi sunichena thuror ibasihishnana amanina manadena kirtaniya sadari. Lord Chaitanya taught that to chant the holy name constantly, one must be more humble than a blade of grass, tolerant like a tree, भगवान चैतन्य eager to offer all respect to others and not expect respect for oneself. भगवान चैतन्य ने सिखाया कि हमेशा हरि नाम लेने के लिए घास के तिनके से भी छोटा, पेड़ से ज़्यादा सहनशील, दूसरों को मान देना और स्वयं मान की इच्छा नहीं करना। Ye tamam prapadyante tam stataiva bhajamyam. Krishna is none different than his name, and Krishna reciprocates according to how we surrender. और जैसे हम समर्पण करते हैं वैसे ही कृष्ण हमारे साथ आदान प्रदान करते हैं। And Lord Chaitanya in this beautiful verse is teaching that an inseparable quality of surrender is this humility, tolerance, and being a well-wisher for others. भगवान चैतन्य सिखाते हैं कि समर्पण का एक गुण है कि नम्रता, सहनशीलता और सबका शुभ चिंतक बनना। Akinchana gochara. So this Brahmin was very angry. तो ये ब्राह्मण बहुत गुस्से हुए। And one day Lord Chaitanya was on the bank of Mother Ganga. और एक दिन महाप्रभु गंगा के तट पे जा रहे थे। And he met this Brahmin. और ब्राह्मण से मिले। And the man was furious. बहुत गुस्से थे। He said, "You have insulted me. आपने मेरी बेइज्जती की। How dare you not give me entrance? क्यों मुझे अंदर नहीं आने With दिया? all my knowledge and all my power, मेरी इतनी विद्वता, मेरी इतनी शक्ति है। today I will curse you. आज मैं आपको शाप दूंगा। I curse you मैं शाप देता हूँ that you will be bereft of all material happiness." आप सारे भौतिक सुख से वंचित हो जाएंगे। And Lord Chaitanya Mahaprabhu, he felt
mighty happy inside his heart when he received this. महाप्रभु बहुत खुश हो गए जब उन्होंने ये शाप सुना. He considered it a blessing to be bereft of all material happiness. तो बहुत अच्छी बात है भौतिक सुख से मुक्त रहना. And Krishnadas Kaviraj Goswami tells that anyone who hears this story with faith will be transcendental through all curses. जो भी ये कहानी को श्रद्धा से सुनता है उसको कोई शाप का प्रभाव नहीं होगा. Actually, anyone who hears the pastimes of the Lord with faith, according to our faith, according to how we're taking shelter of the Lord through his names and teachings and pastimes, Krishna awakens our love for him. हमारी श्रद्धा के अनुसार, किस श्रद्धा के भाव से हम लीलाओं को सुनते हैं, नाम जप करते हैं, उसके अनुसार कृष्ण हमारे हृदय में उनका प्रेम प्रकट करते हैं. But when Krishna blesses us, he entrusts us with the responsibility to share those blessings with others who were suffering the way we were. और जब हमें कृष्ण कृपा करते हैं तो आशीर्वाद देते हैं जिससे हम वो चीज़ दूसरों को बांट सकें जो दूसरों के पास नहीं है. Lord Chaitanya, Lord Nityananda, they delivered Jagai and Madhai. भगवान चैतन्य नित्यानंद ने जगाई मधाई का उद्धार किया. And Srila Prabhupada describes the International Society for Krishna Consciousness is trying to deliver all the Jagais and Madhais, which is practically everyone within the world. श्रील प्रभुपाद ने पूरे दुनिया के जगाई मधाई का उद्धार किया. Lord Chaitanya gave Lord Nityananda Prabhu and Haridas Thakur the instruction to spread the holy names and Krishna prema and Krishna service to everyone. भगवान चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद और हरिदास ठाकुर को आदेश दिया कि कृष्ण नाम जो है सबको वितरित करें. And after some time, there were hundreds and thousands of people in Navadvip who were pure devotees having Sravana Utsav and Kirtanam Utsav. और फिर हजारों भक्त श्रवण उत्सव और कीर्तन उत्सव मना रहे थे. And how fortunate we are. Today we're all a part of this pastime. और वे सब उस लीला के भाग हो गए. By the mercy of Srila Prabhupada. श्रील प्रभुपाद की कृपा से. Lord Chaitanya Mahaprabhu left Navadvip, his beloved mother and wife, Sachimata Vishnupriya, and became a sannyasi just so that he could give this love for Krishna to the least qualified people throughout the world. भगवान चैतन्य महाप्रभु अपनी माता अपनी पत्नी को छोड़कर गए जिससे कि सब पतित जीवात्माओं को कृष्ण प्रेम प्रदान कर सकें. There were scholars, there were priests who were threatening, blaspheming and cursing Lord Chaitanya and his devotees. बहुत सारे विद्वान थे जो कि भक्तों को धमकी दे रहे थे और शाप दे रहे थे. And however much the devotees were just kind and forgiving, it was increasing. और जितना भक्त जो है क्षमा करते थे, दयालु थे, फिर भी वो बढ़ता जा रहा था. How merciful is Sri Chaitanya Mahaprabhu. He told his devotees, I will take sannyas, so that those people who are criticizing, blaspheming, they will bow down to me. And when they bow down to me, their hearts will be open so I can instruct them and inspire them to practice Krishna consciousness. भगवान ने कहा कि मैं संन्यास लूँगा जिससे जो लोग मेरी निंदा कर रहे हैं मेरे को प्रणाम करेंगे, मेरे को प्रणाम करने से अपने हृदय को खोलेंगे जिससे मेरी कृपा को प्राप्त कर सकें. That is how he cared. Srila Prabhupada was given instruction by his Guru Maharaj 102 years ago. श्रील प्रभुपाद के गुरु महाराज ने 102 साल पहले उनको आज्ञा प्रदान की. To bring the message of Lord Chaitanya in the English language to the Western world and all around the world. कि ये जो चैतन्य महाप्रभु का संदेश है पाश्चात्य देश में और पूरी दुनिया में प्रचार करें.
And similar to Lord Chaitanya Mahaprabhu himself and his own Guru Maharaj, Lord Chaitanya Srila Prabhupada, to fulfill that instruction, he took sannyas. और उसी तरह से श्रील प्रभुपाद जी ने उसी कारण से संन्यास लिया जैसे चैतन्य महाप्रभु ने लिया. And he circled the world over 12 times. और 12 बार से भी ज़्यादा पूरे दुनिया में भ्रमण किया. That concept of Vaishnavanam Yatha Shambhu, Lord Shiva, out of his mercy for everyone, he drank the poison. And he said, the highest way to please the Lord is to take inconvenience and sacrifice for the spiritual well-being of others. Srila Prabhupada personified that principle. और ये जो भाव है दूसरों के लिए दुख लेना, कष्ट लेना, श्रील प्रभुपाद ही इसके मूर्तिमान स्वरूप हैं. How many of us, either from foreign lands or even India, how many of us would really understand and appreciate who is Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda? Who would understand this benediction? हमारे में से कितने होंगे जो ये पंचतत्व के आशीर्वाद को समझ सकेंगे? Srila Prabhupada sacrificed his life. श्रील प्रभुपाद जी ने अपना पूरा जीवन त्याग दिया. He said, I have sacrificed, I have shed buckets of blood to bring each and every devotee to this movement. प्रभुपाद जी बोले कि एक व्यक्ति को भक्त बनाने के लिए मैंने कई सारे बकेट खून के बहाए हैं. And he entrusted us with the responsibility to take care of each other, those he loves, with our strengths and weaknesses. और हमको प्रभुपाद जी जिम्मेदारी दी है कि हम एक दूसरे का ख्याल रखें. Especially by facilitating community and culture where we could actually come together with faith to hear and chant the glories of the Lord. विशेष करके एक समुदाय के रूप में एकत्रित होकर श्रद्धा के साथ भगवान के नाम कीर्तन में एकत्र हो सके. But Srila Prabhupada here in Mayapur, knowing what it means to actually sustain a spiritual community based on hearing and chanting, he was going around making sure devotees had mosquito nets. यहाँ पर मायापुर में जब प्रभुपाद थे तो वो जाकर देख रहे थे कि सबके पास मच्छरदानी है कि नहीं. Because they wanted devotees not to get sick or diseased. वो नहीं चाहते थे कि भक्त बीमार हों. He was very concerned about the quality of the prasad that every devotee was receiving. वो ये भी देखते थे कि भक्तों का प्रसाद अच्छा मिल रहा है या नहीं. He cared. वो वास्तव में भक्तों का ख्याल रखते थे. Beyond a mother and a father, he cared for every aspect of devotees' lives. एक माता या पिता से भी बढ़कर वो भक्त के हर एक पहलू का ख्याल रखते थे. Because these are people who have given up everything to one degree or another to assist him. क्योंकि ये भक्त हैं जिन्होंने सब कुछ त्याग दिया है उनको सहायता करने के लिए. And when we have a community that really, a community of devotion and care for one another, then when the temple of the Vedic planetarium is complete and people come to Sri Mayapur Dham, they will experience Srila Prabhupada's mercy. और जब लोग आएंगे समुदाय टेम्पल ऑफ वैदिक प्लांट देखेंगे तब वो श्रील प्रभुपाद जी की कृपा का अनुभव कर पाएंगे. I have 2 minutes left, and I think I was asked to, what was the subject of this lecture? Building the future of ISKCON through care, something like that. So that's what I'm trying to explain, actually.
Please let us, when Srila Prabhupada said you could show your love for me by how you cooperate with one another to spread this mission and preserve this mission. That cooperation is the surrender of actually really, cooperation doesn't mean it's not fighting. प्रभुपाद जी बोलते थे हमको सहयोग दिखाना है, इसका मतलब खाली ये नहीं कि झगड़ा नहीं करना. It means following in Srila Prabhupada's footsteps. प्रभुपाद जी के पदचिन्हों में चलना. With grateful hearts to really care for one another. कृतज्ञ हृदय से एक दूसरे का ख्याल रखना. And spread the glories of Shravanam, Kirtanam, and in spreading Krishna consciousness, that is where the real festival of the soul will be connected with और श्रवण और कीर्तन के द्वारा भगवान की Srila Prabhupada's mercy. और प्रभुपाद की कृपा के द्वारा. Thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद. हरे कृष्ण. Questions? At this time is His Holiness Srila Jayapatak Swami Maharaj speaking? Huh? No, I'm finished. Thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद. But His Holiness Srila Jayapatak Swami Maharaj, how he has taken this instruction of Srila Prabhupada as his life and soul. श्री जयप्रकाश स्वामी महाराज ने भी इस आज्ञा को बहुत गंभीरता से ग्रहण किया. And even through the most inconceivable difficulties that are humanly imaginable, his enthusiasm to lovingly inspire devotees and share Srila Prabhupada and Lord Chaitanya and Lord Nityananda's mercy to the world is fully being given. और श्री जयप्रकाश महाराज ने उसी अपने उदाहरण से सिखाया कैसे तकलीफ लेना और भगवान की सेवा. And so much of what Mayapur Dham is today, on Srila Prabhupada's direction and inspiration, he has given his heart and life to share with us. और ये मायापुर धाम जो है इसका प्रकट स्वरूप है श्रील प्रभुपाद के निर्देश. Hare Krishna. हरे कृष्ण.